So good afternoon, everybody. And today again, we're taking the essay section of your subsidiary English literature, Life's Philosophy by Jawaharlal Nehru. Now, in the last class, we were talking about how when he died, the mother of Pondicherry, she gave a statement, a message that Nehru leaves his body, but his soul is one with the soul of India that lives for eternity. इसका मतलब ये हुआ कि Nehru has gone, he has left his body only. मतलब उनका जो soul है, his soul is one with India and which is going to live for eternity. जो हमेशा हमेशा के लिए soul can never be destroyed. और जो आत्मा है जो हमेशा रहती है, eternity मतलब हमेशा हमेशा के लिए, बस जो मरती नहीं है, अमर. और ये भी कहा गया था कि नेहरू came to symbolize India. He became the symbol of India. People identified India as Nehru's India. Nehru synonymous to India. And this is one of the reasons why उनकी मौत के बाद, when he died, on the day of his death, the mother in Pondicherry gave the following message. Nehru leaves his body. It means Nehru has died. Nehru has left his body. But his soul is one with the soul of India. But his soul is merged in India. And that is going to be alive forever. It means eternity. It means हमेशा हमेशा के लिए. And the following essay, Life Philosophy by Jawaharlal Nehru. This he wrote जब वो prison में थे, freedom fighting के process में, when he was in the prison during the year 1942 to 1945. उन्होंने एक बुक लिखा था, The Discovery of India, जिसमें उन्होंने बताया था अपनी फिलॉसफी के बारे में, अपने लाइफ के सिद्धांत के बारे में, अपनी फिलॉसफी, अपना motto of life, अपना meaning of life, what he has understood in life, what life has taught him, क्या क्या लेसन उन्होंने सीखा लाइफ से. और one can sense that Nehru is impatient. और उसको पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आता है कि Nehru was always impatient. Impatient का मतलब होता है always wanting to learn more. Impatient का ये मतलब होता है कि वो restless थे, कुछ करने के लिए, कुछ सोचने, कुछ जानने के लिए, कुछ बताने के लिए, कुछ नया लाने के लिए. Because he was the architect of modern India. उन्होंने इंडिया को मॉडर्न बनाने का एक सपना देखा था. And he was the architect of modern India, जो कि आप पढ़ चुके हैं. तो इसमें ये पता चलता है, इनका फिलॉसफी सबसे पहले रिलीजन के बारे में बात करती है. When he talks about religion, he says that he is impatient with all forms of religion. तीन चीज है जो जिसके बारे में उनको कोई, he was not at all interested. Religion, number one, philosophy and metaphysics. तो किसी भी रिलीजन का फिलॉसफी क्या है, मेटाफिजिक्स क्या है? तो फिलॉसफी आप जान रहे हैं, दर्शन, सोच, किसी की सोच. And if you ask Nehru about religion, he did not bother about whether you are from a Hindu religion or the Sikh religion. किसी भी religion में उनको कोई interest नहीं था. He had nothing to do with any kind of religion. ये term जो आ रहा है, Nehru is impatient with all forms of religion, का मतलब होता है कि he was not bothered about any religion. Religion never attracted him. आकर्षित कोई रिलीजन उनको नहीं करता था कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो. You are just Indian, that's it. तो पहली फिलॉसफी उनकी तो ये थी कि we are all one and we are all Indians.
And here we are talking about unity. What Nehru sense, what Nehru feels is that religions means there has to be unity. You must not make friends. You must not deal with people who are of your own religion and discard people who are of not your religion. So one thing comes into mind is that you have to respect each religion and do not pay much attention to religion. अभी आपको या हमको नहीं कर रहे हैं, उनकी ये सोच है, उनकी ये फिलॉसफी है that he had nothing to do with religion. He had nothing to do with philosophy कि क्या आप सोच रहे हैं, क्या आपका thought process क्या है. And he had nothing to do with metaphysics. अब मेटाफिजिक्स क्या है और मिस्टिसिज्म क्या है बताएंगे आपको. मेटाफिजिक्स क्या है? इट इज अ फील्ड ऑफ फिलॉसफी. फिलॉसफी का एक फील्ड है जो कि फोकस होता है कि यूनिवर्स कब शुरू, ये दुनिया कब शुरू हुई है, इसकी रियलिटी क्या है, ये दुनिया क्या है, ये दुनिया कब शुरू हुई है, टाइम क्या है, स्पेस क्या है, कब से हो रहा है. तो ही टॉक्स अबाउट, ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट मेटाफिजिक्स, जो कि एक फिलॉसफी का एक फील्ड है, एक ब्रांच है जो कि फोकस करता है ऑन रियलिटी. किस चीज की रियलिटी? कि ये दुनिया, यूनिवर्स कब शुरू हुआ, टाइम क्या है, कब शुरू हुआ, क्या स्पेस हुआ, व्हाट इज दिस रियलिटी, व्हाट इज दिस यूनिवर्स. So Nehru wants to talk about people living in the universe, not about the universe. यूनिवर्स के बारे में उनको कोई मतलब नहीं है. He does not give, he gives least importance to metaphysics. दुनिया कब शुरू हुई, कब खत्म होगी, क्या होगा, क्या क्या इसका क्या सोचना है. He always talks about people who are living in the universe. यहाँ पर क्या हुआ? He is interested in people जो कि यूनिवर्स में रह रहे हैं, जो कि दुनिया में रह रहे हैं. दुनिया यूनिवर्स में नहीं, the people living in the universe. This is metaphysics. और सबसे पहले क्या है? He does not believe in religion. He never believed in religion. He did not give any importance to religion. He does not give any importance to philosophy or metaphysics. दुनिया कब शुरू हुई, दुनिया कब खत्म होगी, कब से हो रहा है शुरू, कब क्या हुआ, नहीं. He was not at all interested, but yes, he was interested in the people living in the world. So what he was more interested in was the people who are living in the world. And then he talks about mysticism. इसका मतलब क्या होता है? A spiritual belief, एक धारणा, that connection can be obtained with God. ईश्वर से, भगवान से कनेक्शन बनाया जा सकता है. So the meaning of mysticism, that ईश्वर से कनेक्शन बना सकता है इंसान. A spiritual belief, जो कि बहुत धार्मिक होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं गॉड से रिश्ता बना सकता हूँ, कनेक्शन बना सकता हूँ. कैसे? मेडिटेशन के थ्रू, पूजा पाठ के थ्रू हम बना सकते हैं कनेक्शन विद गॉड. मैं उनसे, भगवान से बात कर सकता हूँ. मैं दिन भर मेडिटेशन करता रहूंगा, मैं माला जपता रहूंगा, पूजा करता रहूंगा, तो या मैं 24 घंटे मैं मेडिटेशन में हूँ, तो ईश्वर से कनेक्शन हम बना सकते हैं. यहाँ पर ही सेइंग दैट आप जिनके साथ रह रहे हैं उनसे कनेक्शन बनाइए. कनेक्ट विद पीपल. अगेन ही इज टॉकिंग अबाउट पीपल. He says, do not, what is the point of connecting with God? Why do you want to connect with God whom you have not even never seen? You will never see, you will only see him after you die. तो mysticism से उनको कोई मारे मतलब नहीं है. He is not at all interested in mysticism. कनेक्शन ही बनाना है, then connect with people. अगेन यहाँ पर उनका मतलब रहता है
What is the use of connecting with God? Connect with the people. जिनको देखा नहीं है उनसे आप कनेक्ट करके भी क्या कर लोगे? कनेक्ट विद पीपल, नो योर पीपल, जो तुम्हारे आसपास है, जो तुम्हारे फैमिली में है, पीपल हु आर क्लोज टू यू, कनेक्ट विद देम. Why do you want to go and leave the people you are working with, जिसके साथ रह रहे हो उसको भूल करके, और तुम चले हो कनेक्शन बनाने ईश्वर से? ये आपको, अगेन आई एम सेइंग, दिस वाज हिज फिलॉसफी. Why should I indulge in meditation and yoga and any kind of spiritual belief, धार्मिक हो जा करके, स्पिरिचुअल हो जाना, और इस दुनिया को त्याग करके ईश्वर से कनेक्शन बनाना? उसके अगेंस्ट थे वो. ही वॉज टोटली अगेंस्ट दिस. एंड व्हाट ही वांटेड, वो चाहते थे क्या? फॉर एग्जांपल इन दिस, डू नॉट कनेक्ट विद द, व्हाई डू यू वांट टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स एंड नो व्हेन इट हैपेंड, व्हेन द यूनिवर्स केम. दुनिया कब शुरू हुई, दुनिया कब खत्म होगा, कब से चला आ रहा है, क्या टाइम है, क्या स्पेस था? नो, कनेक्ट विद द पीपल, know the reality of the people who are living with you, who are there in the society. Secondly, mysticism, which means a spiritual belief that you can gain connection with God through meditation, ध्यान करके, पूजा पाठ करके ईश्वर से कनेक्ट हो सकते हैं. ईश्वर से आप, you can be connected. यहाँ पर उनकी धारणा क्या थी, उनका फिलॉसफी क्या था? Connect with the people. An example of mysticism is believing that a direct connection can be made with God through sitting and thinking. मतलब ध्यान लगाने से ईश्वर को आप प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर से आप मेडिटेट कर सकते हैं. And spiritual that are primarily concerned with the existence of other world beyond this one. और ये बैठ के सोचते रहना कि इस दुनिया से परे दुनिया भी एक है. ये हमारी दुनिया है, अब इस दुनिया से परे भी एक और दुनिया है, ईश्वर की दुनिया, भगवान की दुनिया. अब उसको जानने के लिए आप इस दुनिया को भूल रहे हैं. तो है ना, इस लोक के लोगों को पहचानिए, उनको जानिए. तो जो इस लोक में लोगों को नहीं जाना, तो भगवान को जान के भी क्या करेगा? तो उसकी बनाई हुई जो दुनिया, उसको ठुकरा रहे हो. तो जो उसकी दुनिया को ही ठुकरा रहे हो, तो उसको तो कहाँ से पाओगे? He was totally against such people जो बैठ के ध्यान कर रहे हैं, दो लोगों की लोगों पर उनका ध्यान नहीं है. People who are not concerned with the people, ऐसे कुछ तांत्रिक हैं, कुछ जो तंत्र मंत्र करते हैं, या कुछ अपने को सेंट बोलते हैं, जो एक्चुअली में जो पीपल हु अकॉर्डिंग टू नेहरू दैट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है, गॉड इज देयर, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट. एक हिडन एजेंडा जरूर है कि हाँ, देयर इज गॉड, ही डज नॉट बिलीव, डोंट बिलीव इन गॉड. उनकी धारणा कभी नहीं है कि ईश्वर पर विश्वास ही नहीं करो, बिलीव इन गॉड. लेकिन डू योर वर्क ऑल्सो. उनका ये कि आप, वर्क इज वर्शिप. आप पहले ही देख लिया, उनका स्लोगन क्या था, आराम आराम है. तो इस दुनिया में आए हो, तो इस दुनिया में जो भी इंसान है उसको काम करना है. अब चुपचाप बैठ के किसी मंदिर में बैठ के किसी पहाड़ पे जाकर के माला फेरते रहिए कि हम दूसरी दुनिया को ढूंढ रहे हैं, दूसरी दुनिया को पाने की कोशिश कर रहे हैं. तो इस दुनिया को तो पहले समझोगे, तब तो उस दुनिया में जाओगे जिस दुनिया में तुम हो. द वर्ल्ड दैट यू आर इन, नो योर वर्ल्ड, नो द पीपल लिविंग इन द वर्ल्ड. सो उनका ये फिलॉसफी था. Now, he has little sympathy with people who are absorbed in finding an answer to the riddle of the universe, as it leads them away from the individual and social problems of today. तो ऐसे लोगों से वो बिल्कुल कोई सिंपैथी नहीं था, उनके लिए कोई जगह ही नहीं थी उनके लाइफ में. कि जो पीपल हु इग्नोर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इग्नोर करते हुए, नेग्लेक्ट करते हुए एक आंसर ढूंढ रहे हैं, एक खोज में निकल गए हैं कि ईश्वर क्या है, यूनिवर्स क्या है.
और नेहरू कहते हैं कि ये ऐसे लोग हैं जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं. दे आर रनिंग अवे फ्रॉम द डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ टुडे. साधु बन गए, यहाँ चले गए, वेलूर मठ 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 पर चले गए. हाँ, जाकर सोशल वर्कर बनना तो पहले तुम अपने घर को त्याग. चैरिटी बिगिंस एट होम, ये भी सुना था ना. तो तुम तो चले गए दूसरे को ऊपर वाले की खोज में. व्हाट अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपके परिवार में, आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. व्हाट अबाउट दैट? तो ऐसे लोगों के लिए उनको कोई सिंपैथी नहीं है, जो कि तंत्र मंत्र में, जो कि तांत्रिक बन के तो यहाँ हर चीज को छोड़ करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग खड़े होते हैं कि हमको दूसरी दुनिया में के बारे में जानना है. दुनिया क्या है, भगवान क्या है, यूनिवर्स क्या है, कब शुरू हुआ है. अवे फ्रॉम द इंडिविजुअल एंड सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ टुडे. मतलब ये लोग अपने लोगों से जो अपने लोगों को जो त्याग करते थे, पीपल हु डिनाई the needs of their own family, the needs of their own people. Such people are, according to Nehru, they are selfish. जो अपने प्रॉब्लम से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं निभाते हैं और भाग खड़े होते हैं एक एस्केप की तरह, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग खड़े होते हैं. एंड दिस वे दे आर डिनाइंग their own people, like looking after the family, taking care of their parents. तो ऐसे लोगों के लिए कोई सिंपैथी नहीं उनको. अब लेट अस टॉक अबाउट उनका लिविंग फिलॉसफी क्या था. So Nehru's interest is in this world. Now this is very important. This was his main philosophy, जिसके बारे में हाईलाइट हम करना चाह रहे हैं. So Nehru's interest is in this world. And the cornerstone, मतलब the foundation of his philosophy क्या है? जो cornerstone है, जो philosophy है, जो the main motto of his life is that he is interested in this world. Interested in this world. He does not want to know what is happening beyond. मेरे मरने के बाद क्या होगा, दुनिया कब शुरू हुई. He is not at all interested. The day-to-day problems of the world, the day-to-day problems of the people, the day-to-day problems, the existing problems, and how to solve them. So this was his philosophy. And the cornerstone or the foundation of his philosophy is a deep belief. So गहरा एक belief है, उनकी जो सोच है कि man's ability, प्रोग्रेस कब होता है, जब वो क्या करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर देता है. एबिलिटी टू प्रोग्रेस, जब तक क्षमता प्रोग्रेस करने के लिए नहीं होगी, तब तक वो अपना ड्यूटी कैसे करेगा. So Nehru's interest is in this world, and the cornerstone or the foundation of his philosophy is a deep belief in man's ability to progress. तो किस तरह से अपनी क्षमता को बढ़ाया जाता है. क्षमता बढ़ती है तो प्रोग्रेस करोगे, नहीं बढ़ाओगे तो जहां हो वहीं रहोगे. You have to be capable to move ahead in life. He declares, अब वो क्या डिक्लेयर करते हैं? What does he declare? A living philosophy must answer the problems of today. मतलब न पहले न बाद में, अभी क्या हो रहा है. The existing problems has got to be solved. And he is ऐसा नहीं कि he is not denying science. And would like to use science to solve the problems of today. बहुत ज्यादा इंटरेस्ट उनको साइंस में भी नहीं है.
but he would like to use science. With the help of science, he wants to solve the problems. Science too. Students who are joining late, let me remind you, please join on time. Otherwise, what is the point? You're missing out on so much of things. So, साइंस में भी बहुत इंटरेस्ट नहीं था उनको, was not उतना hung up नहीं था, it was not so much bent on science also, but उतना ही उस साइंस का था जितना कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. Now, Nehru's early years, when he was very, जब वो बहुत छोटे थे, until he was 12-13 years old, he used to believe जो whatever उनके पेरेंट्स जो कहा करते थे उसको वो बिलीव करते थे. जैसे हर बच्चा, एवरी चाइल्ड, ईच चाइल्ड बिलीव्स whatever the parents are saying. उनके साथ भी वही था. जब वो छोटे थे तो यूज्ड टू बिलीव 100%, मानते भी थे बात सबकी, सुनते थे, समझते थे, मानते थे. And he used to believe what their parents believed until he was a young adult. And जैसे ही वो बड़े होने शुरू हुए, when he reached adulthood, फिर उनकी सोच बदली. Then his entire thought process changed. और किस तरह से अपने आप को उन्होंने अपने आप को एक न्यू आइडेंटिटी दिया उन्होंने. So let's talk about his early life, early years. So Nehru was born to a family of Kashmiri Brahmins. He was the son of Motilal Nehru, a renowned lawyer and leader of the Indian independence movement, who became one of Mohandas Mahatma Gandhi's prominent associates. And Jawaharlal Nehru was the eldest of 4 children, 2 of whom were girls. A sister, Vijay Lakshmi Pandit, we all know about her, later became the first woman president of the United Nations General Assembly. Until the age of 16, अब जब तक वो 16 years के थे, Nehru was educated at home. अब घर में ही उनकी एजुकेशन हुई थी by a series of English governess. Governess का मतलब होता है especially एक women होती हैं, women who governess मतलब घर पे आके कोई पढ़ा रहा है, कोई टीच कर रहा है, पढ़ा भी रहा है और बच्चों को देखभाल भी कर रहा है. तो 16 साल तक he was educated at home by a series of English governess. जो भी governess हुआ करती थी, they were English, मतलब Indian भी नहीं. governess क्या होती है बता दिया मैंने. Formerly women employed to teach children in their own homes, and sometimes they also take care of children. बच्चों की देखभाल करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो कि दिन भर 24/7 ड्यूटीज उन लोग का रहा करता था. और 1 by 1 ये लोग आके पढ़ाते थे. एंड इसमें से जो पढ़ाने आया करती थी, उसमें से ओनली वन ऑफ देम एक आयरिश वुमन थी, जो कि appears to have made any impression on him. So Jawaharlal also had a respected Indian tutor who taught him Hindi and Sanskrit. और इनके अलावा एक इंडियन टीचर भी थे, a very reputed, respected teacher, जो उनको पढ़ाया करते थे हिंदी and Sanskrit. In 1905, he went to Harrow, a leading English school, where he stayed for 2 years. Nehru's academic career was in no way outstanding. वो कहते हैं कि उनकी जो academic career उतनी अच्छी नहीं थी, in no way outstanding. कहीं से भी outstanding नहीं था उनका school life. From Harrow, he went to Trinity College. वहाँ से वो चले गए Trinity College में, Cambridge, where he spent 3 years earning an honors degree in natural science. और वहाँ से छोड़ने के बाद, on leaving Cambridge, he qualified as a barrister after 2 years at the Inner Temple, London, where in his own words, अपने शब्दों में वो कहते हैं, he passed his examination. उन्होंने examination pass किया
with neither glory nor ignominy. वो अपने बारे में कहते हैं कि उन्होंने एग्जामिनेशन बस पास किया था, इसमें कोई बहुत ब्रिलियंस वाली बात नहीं थी. ग्लोरी मतलब होता है ब्रिलियंस. he calls himself, I was not a bright student. तो मैंने कोई ग्लोरी में पास नहीं किया. मेरे जो रिजल्ट था, इट वाज नॉट ब्रिलियंट. ना ही ब्रिलियंट था और ना ही ह्यूमिलिएटिंग था. मतलब ग्लोरी भी नहीं था और ना ही इग्नोमिटी. इग्नोमिटी का मतलब होता है ह्यूमिलिएशन. तो ही वाज एन एवरेज स्टूडेंट. वो अपने बारे में कहते हैं कि ही वाज एन एवरेज स्टूडेंट. ही डिड नॉट पास विद ब्रिलियंस, बट इट वाज नाइदर ब्रिलियंट नॉर ह्यूमिलिएशन. और जो 7 years whatever he spent in लंदन या अपने घर में वापस जब आए थे, तो वो कहते थे कि ही वॉज वेरी कंफ्यूज्ड. लंदन इंग्लैंड में भी जब पढ़ने गए थे, एंड देन व्हेन ही केम बैक, व्हेन ही गॉट बैक, he says I have become a queer mixture of east and west, out of place everywhere, at home nowhere. तो वो कहते हैं कि जब मैं वापस आया तो I was very doubtful, I was very confused. और बोले कि मेरा आई एम मिक्स क्वियर मिक्सचर, मतलब मेरा अजीब एक मिक्सचर हो गया हूं मैं, जिसमें ईस्ट एंड वेस्ट का एक कॉम्बिनेशन है. और वो अपने बारे में कहते हैं कि आई वाज आउट ऑफ प्लेस, मतलब कि ना मैं यहाँ का था. मुझे उन्हें फील होता था कि ना मैं इंडिया में फिट कर पा रहा हूँ और ना मैं वहां फिट कर पा रहा था. एट होम नो वे, मतलब कहीं भी एट होम फील नहीं कर रहे थे. ही वॉज नॉट कंफर्टेबल देयर, neither he was comfortable in his own home, yeah, India. And he went back to India to discover India. Then he thought of coming back to India, and this was when he made up his mind. He wanted to come back to discover India, and this is how his thoughts changed. How from an aristocratic family, how he came to join the Congress. Four years after his return to India, in March 1916, Nehru married Kamla Kaul, who also came from a Kashmiri family and had settled in India. Their only child, Indira Priyadashini, was born in 1917. So whatever philosophy उनका जो था, वो इन्हीं दिनों उनका डेवलप किया था. Like उसके बाद he started developing whatever was done in the first half of the lesson. This was after he returned, and then whatever happened in his life, whatever he thought about metaphysics, about religion, everything happened in the next phase of his life when he came back after his education to India. And then the world identifies India with Nehru as the guiding star. Or the world, the entire world, ये आइडेंटिफाई करता है नेहरू को एज द इंडिया. नेहरू एज symbolizing as India. The world identified India with Nehru. How? As the guiding star. This was his philosophy in a nutshell. Now some of his quotes. He says that his belief is that loyal and efficient work is a great cause, even though it may not be immediately recognized, ultimately bears fruit. मतलब कि efficient working, अब अगर आप लॉयल हैं, अगर आप efficient हैं, अगर आप क्लास में सिर्फ सुन भी रहे हैं, आप इनडिसिप्लिन नहीं है, तो तुरंत रिकॉग्निशन नहीं मिल सकता आपको, लेकिन कुछ समय के बाद आपको फायदा होने वाला है. इट विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली. हार्ड वर्क तुरंत रिजल्ट नहीं देता है, लेकिन कुछ समय बाद जरूर रिजल्ट देता है. सो लॉयल एंड एफिशिएंट वर्क in a great cause may, though it may not be immediately recognized, ultimately bears fruit. और मैंने बताया ultimately वो आपको हार्ड वर्क करेंगे तो सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा. Second, he thinks about
The person who talks most of his own virtues is often the least virtuous. जो अपने बारे में बखान करते रहते हैं. Somebody, people who talk about his own qualities, people who talk about his own goodness, people who talk about himself, that how skilled I am, how virtuous I am, I have good qualities. बोलने की जरूरत क्या है? लोग देखेंगे ना कि वो तो देखने की चीज है, वो आपको बोलने की चीज थोड़ी है. If you are good, people will know that you are good. You will not have to speak it out. I am good, I have got good qualities, I have good communication skills. बोलने की जरूरत क्या है? वो तो सामने दिखता है. So the person who talks most of his own virtues, वो ये कहते हैं, जो बंदा जो अपने बारे में बहुत ज्यादा बोलता है, वो उसमें कोई खास वर्च्यू नहीं रहता है, कोई खास क्वालिटी रहता नहीं रहता, इसलिए वो बोलने की जरूरत पड़ जाती है उसको कि मेरे में ये है, मेरे में वो है, मेरे में वो. तो दिख नहीं रहा है, it doesn't show. So he has to tell people, I am good at this, I am good at that. अगर गुड होते तो लोगों को नजर आता. तो कहते हैं कि जो जिनके पास कुछ क्वालिटी नहीं होती है, वही अपने बारे में ज्यादा बोलते रहते हैं. तो आप कुछ भी कर रहे हैं, आप कितने भी नॉलेजेबल हैं, कितने भी पैसे आपने कमा रखे हुए हैं, पीस नहीं आपके पास है तो कुछ नहीं है. विदाउट पीस ऑल अदर ड्रीम्स वैनिश. पीस नहीं है तो सारे के सारे जो ड्रीम्स हैं वो गायब हो जाएंगे. और एंड आर रिड्यूस टू एशेस, और सब जल के राख बन जाएंगे. सो व्हाट इज हिज ही हाइलाइट्स his philosophy about peace. No peace, nothing. Failure comes only when we forget our ideals and objectives and principles. और वो ये कहते हैं, नाकामयाबी तभी सामने आती है, तभी दरवाजा खटखटाती है. Failure knocks. कब? when we forget our ideals, अपने सिद्धांत को, अपने आइडियल्स को, अपने मकसद को, अपने प्रिंसिपल्स को भूल जाते हैं. तो जैसे ही हम सब भूलना शुरू करते हैं, ध्यान देना, यहाँ फॉरगेटिंग का मतलब होता है when you forget to think about कि आपका मकसद क्या है, how you should behave, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका आइडियल्स क्या है, आपका सिद्धांत क्या है. जैसे ही आप ध्यान देना बंद करते हैं, वैसे ही फेलियर आपके दरवाजे को खटखटाती है. फेलियर कम्स ओनली when we forget our ideals and objectives and principles. Any questions, anybody? Any questions? Please raise your hand if you have any question. Hello? Do you have any questions? Please raise your hands. Am I not audible? Yes? किसी को कुछ पूछना है? नहीं मैम. समझ में आ गया? यस मैम पीडीएफ शेयर कर दी. वो तो ऑलरेडी शेयर्ड है, कंटेंट ऑलरेडी शेयर्ड आपके पास. चलिए, कुछ नोट्स मैंने बनाया था, मैंने आपको ऑफ कोर्स डेफिनेटली आई विल शेयर. यस रोहित? मैम मैंने सर्च किया था यूट्यूब पे, पर बहुत ही दिक्कत हो रही थी आपकी वीडियोस देखने में. ओके, देन आई विल शेयर. ठीक है, आई विल शेयर इन योर ग्रुप. मैम जस्ट मेक अ प्लेलिस्ट मैम. Yeah, I'll do that.
Okay, I'll do that. And I also be sharing this in your group if you want. Yes. Okay. Yeah. Okay, ma'am. Thank you. So we have not been able to do again the future tense. I think if you have any questions, you may ask this. Otherwise, I would like to start off with the future tense, which was pending. No more question, ma'am. Okay, we did the present tense, the past tense, and let me just give out the details of the, not the details, but the structure of the future tense. And you can do this for homework. Future tense is something which is we are going to talk about immediately after a second, immediately after a week, after a month, after a day. Future की बात, एक सेकंड के बाद भी future tense हो जाता है. Okay, talking about the future. I will, I shall. I will be. I will have. Sorry. I will have been. Do this for your homework. Future tense. I think last time you did. Past tense. Talking about the future. अब shall का यूज बहुत कम होता है. Shall आप यूज कर सकते हैं. Shall we come? Shall we start? When you ask a permission. Shall I continue with the class? Shall we leave? Shall we have a cup of tea? ठीक है. Otherwise, normally I will. Okay. I will or I shall will take B1. I will be take B4. I will have will take B3 and I will have been will take B4. What is the meaning of I will or I shall? It means something you're talking about the future. Like I will call you. I will. Oh, I shall call you tomorrow. मैं कल आपको फोन करूंगी. I shall start a new lesson tomorrow in the next class. I will be. Make a sentence. I will be. ING. I will be playing. Playing what? Cricket. I will be attending my classes. I will be attending my classes. मैं अपना I will be attending my classes, meaning of which I think you already know. अब अपना class attend करते रहेंगे. I will have. What is the meaning of I will have? Sorry, I will have reached home by 6. I will have reached home by 6.
I will have reached home by 6 in the evening. इसका हिंदी क्या हुआ? मैं शाम हम 6 पहुंच बजे गए हैं. तक घर पहुंच चुका हूँगा। I will have आगे का डेट, आगे का टाइम, अभी का नहीं, पास्ट का नहीं, प्रेजेंट का नहीं. हेलो मैम। मैम का नेटवर्क फिर से चला गया। नहीं तो कर लाइव हो रहा है, म्यूट कर लो। हेलो मैम। साउंड नहीं आ रहा है मैम। हो गया था ना, बिकॉज ऑफ द नेटवर्क इशू. तो बताइए द मीनिंग ऑफ आई विल हैव रीच्ड होम बाय 6. हम 6 बजे तक घर पहुंच चुके होंगे. अभी नहीं पहुंचे हैं, पहुंच जाएंगे. आई विल हैव रीच्ड होम बाय 6 इन द इवनिंग. 6 बजे तक हम पहुंच चुके होंगे. आई विल हैव रीच्ड होम बाय 6 इन द इवनिंग. अभी नहीं पहुंचे हैं, 6 बजे तक हम पहुंच. कम एट 6, अभी मत आना. 5 बजे मत आना, 4 बजे मत आना, 6 बजे तक आना. 6 बजे तक हम पहुंच जाएंगे. तो आई विल हैव रीच्ड होम, हम पहुंच चुके होंगे 6 बजे तक. So if you want to come, you can come after 6. So I will have been
I will have been sleeping. After 10. 10 बजे के बाद मैं सो रही होंगी. पहुंच चुके होंगे, सो रहे होंगे. सो रहे होंगे, पहुंच चुके होंगे. I will have reached home. पहुंच चुके होंगे. And I will have been sleeping. सो रहे होंगे. 10 बजे के बाद I will have been sleeping after 10. We will discuss this in the next class, future tense. Do your homework and then मैम प्रेजेंटेशन पीपीटी भी बनाना है क्या? if you want to make it on PPT, if you know how to make it on PPT. अच्छा रहेगा. ठीक है? And we'll discuss this in the next class. Otherwise, life philosophy खत्म हो चुका है. You did not ask any question. मतलब किसी के पास question नहीं है. जो content है already is shared. फिर सब group में share कर देंगे. And about today's live, I will be sharing this in your group. Okay? Okay. All right. Okay. Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thanks, ma'am.